Good afternoon and warm welcome to all of the participants, panelists, and the entire TSPL team. So thank you for joining this very informative session, part of exclusive set of sessions wherein expert from the CA community comes together to decode the topic of interest you and your clients. Be it matter of tax or dealing with the financial data, our speakers will share their expertise in the context of small and medium enterprises. So also with that, we will also demonstrate how the latest releases of Tally Prime simplifies audience in compliances. So definitely, and allow me some time to introduce our first two speakers of the day. And with this, I would like to introduce our first speaker of the day, CA Divya Agrawal ma'am, a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, and has also qualified LLB. She is an alumnus of Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and presently a partner in one of leading chartered accountancy firm, Savaria and Company. Before coming to GST practice, she had worked with a renowned Big Four. She's regularly contributing to articles, infographics, and videos on GST students and professional on her YouTube channel. That is Tax Without TS. So, which presently has a 1.5 lakh subscribers and has received a silver play button from YouTube. She has been recognized a young CA achievers by NIRC of ICAI at the CA Women Conference in 2019 and provided with the certificate of appreciation by NICASA of NIRC of ICAI for her contribution as a faculty in GST course for the students of Chartered Accountancy during the year of 2018 and 19. She also authored 3 books on various topics related to GST. So that's about CA Divya Agrawal ma'am. So with her, let me introduce the second speaker of the day, CA Mr. Virender Agrawal. He has graduated from Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and scored 91% marks in CPT level and All India topper at both CA intermediate and final year level. He has been awarded the Best Paper Award by ICAI for taxation and CA intermediate level for advanced management accounting and indirect taxes at the CA final level. He did his articleship training from BMR Advisor and has got invaluable experience in advising multinational and domestic clients. Example, Google, ITC, Network 18 Group, Discovery Group, LG Group, Maruti Suzuki, Make My Trip, Yatra, Petronet LNG, Shell, Dassault Aviation, etc. Across all areas of taxation, ranging from advisory and transaction structuring to compliance and litigation. He has also been engaged in full-time teaching of taxation subject to CA student for the past seven years. So with this, I think we will start our discussion. And I would like to ask Divya Agrawal ma'am first. So we will start this discussion, Divya ma'am. So first question to you is, what is your opinion regarding reform made in GST by the budget 2022? Firstly, thank you so much, Ekharji. Thank you so much, Gyanendra for calling me over this prestigious platform. And I would love to address my entire audience regarding the budget. Now, coming over to your question that what is my opinion regarding the budget? So as always with the budget, we come with so many expectations that in this time budget will help all the individuals or the SMEs or the startups, etc. Same ways this time also we were having a lot of expectations. But specifically when I talk in respect to GST, as there was in the speech by Nirmala Sitharamanji, very short and crisp in respect to GST, talking mainly about the revenue collection, and exactly opposite happened basically when we saw this finance bill. Reason being, there was a major change in various provisions of the GST.
So considering all those changes, I think the overall reaction is that if you are non-compliant, if you do not comply with the GST provisions, like filing your returns, consider taking your input tax, reflecting your sales, etc., if you're not doing it in accurate manner and timely manner, then definitely it is very hard for you to survive in future. Reason being, as per government, it is very, very important to comply. And as the provision goes, if you are not able to comply, there are a lot of hardship coming for you in your business. So this is the general opinion which I can frame from the entire budget changes in respect to GST. Okay, good to hear that, and thanks for your input. So with that, actually, I have a second question as well for you. The day the GST was implemented, it was said that it is going to be a great law, as the law shall allow the seamless flow of the credit. So do you think that the changes by the budget are in line with the spirit of the law formulated in 2017? See, in 2017, we were actually very hopeful with respect to GST, because ITC, a seamless flow of ITC, was the actual key highlight of GST. That means everybody, that is whosoever comes into business, will be able to take the ITC, input tax credit, be it in respect to the services or the goods or the capital goods or the inputs, etc. But as the time is passing by, taking the ITC, it is becoming a Herculean task. It is becoming very difficult, because when I say about the people who are taking the fake input tax credit, raising the fake invoices, etc., that is the ones who are not genuine, who are not bona fide. Because of them, hardship is being faced by the genuine buyers. Now, when I talk about the conditions today in respect to ITC, first of all, we must be having the regular, the right tax document, that is the tax invoice or the bill of entry, etc. Secondly, we must receive the inputs or the services or the capital goods, etc. Third, it is like you must have filed the return, you must have paid the taxes. Now it is like you must take the input which is there in your auto-generated statement, that is 2A. Okay, and now there's one more condition which is being provided by this bill, by this finance bill 2022, which is in respect to section 38. So in all these 5 conditions, and now 6, they are actually making it difficult to take the ITC. Secondly, there is another amendment by the budget, which is in the section number 49 bracket 12, which says that earlier it was rule number 86B, wherein it was said that if your turnover of a month, it exceeds 50 lakh rupees, then in that case, only 99% of your ITC can be utilized against your output liability, and the remaining needs to be paid in cash. But there were certain other conditions. If you fulfill them, you can use the entire amount also. So now in GST, what is happening is government, after seeing all the kind of frauds which are coming up, they are actually changing the law. But instead of changing the act, they are simply amending the rules, and the rules, they must actually be in line with the act. So the problem here is, if I talk about the ITC also, the government is changing it again and again, but the changes are first coming in rule and then in the act, which is making it difficult. And that is where there are long list of the cases which are pending in the honorable courts, and people are challenging each and every provision on this basis itself, that if it is written in rule and not in the act, it is not constitutionally valid. So if I talk about the ITC, same concept is there in the ITC. The conditions, they have increased. Section 49 bracket 12, which is being introduced right now, it is again making it very difficult. Then now, earlier it was a matching concept like GSTR2, etc., which is now completely eliminated. And instead it is said it is totally on the self-assessment basis of the taxpayer that you can avail your ITC. Somewhere it is good, because the earlier provision was actually never implemented the day GST was being implemented. So this is how things are changing. And actually this section 38 and section 49 bracket 12 has changed the entire scenario for the ITC. Okay, so that was a brief clarification. Thanks for that. So as we are talking about ITC, it is heard that the new section is added, or maybe some section starting about GSTR 2A. So it is substituted. So what is the change? As I have told you right now itself, Shekharji, it is section 38 which is being inserted. It is actually substituted. Earlier, there was a return mechanism wherein the supplier has to file his GSTR1. Then after
2A will be generated. Purchaser will see through its 2A and then accordingly file his 2. Basis that if there is any discrepancy, it will be reflected in 1A to the supplier, and accordingly supplier and purchaser finally reconcile their everything and will file their 3. But this was only on papers and I was never implemented on the portal. Rather, what was implemented was GSTR 1 and 3B. Midway came the 2A concept, and right now even 2A is done away with, only 2B concept is there. So when I say about like GSTR 1, 2B and 3B, so for this 2A thing, section 38 is there. Okay, it has been substituted completely, and it says that you can take, being a purchaser, I can take the input only on the basis of 2B and not any other thing, anything else. And in this, subsection 2 is basically which requires you to be, I would say, antaryami. Reason being, now you have to see whether the supplier is making all the compliances or not. That is, if he is not filing his 3B or 1, or if it is like there's a difference in the sale liability which he has reflected in 1 and the one on which he has paid the tax is different, or if he has taken extra input apart from the one he was eligible to, the input of the purchaser is going to be reversed. And I think this is very harsh when I talk about the purchase from the purchaser's point of view. So clarity needs to come in why for the default of the supplier, a genuine, a bona fide purchaser is going to suffer. And I really want before this provision gets implemented, reason being it is right now, it is finance bill. Once this become act and once the notification is being issued, then only this provision will come into effect. So this section 38 is actually making things very difficult, and it is like you have to run behind the supplier ki supplier प्लीज आप अपने कंप्लायंसेस कंप्लीट रखिए, अगर आपने कंप्लीट नहीं रखे हैं तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है. एंड कंसिडरिंग द डेटा व्हिच इज रिक्वायर्ड एज पर 38, आई थिंक द फॉर्मेट ऑफ टू बी आल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड. Okay, so thank you ma'am for the inputs. Let me go to Vijender sir. So I have a question for Vijender sir now. So every stakeholder seeks some reduction in tax rates every time in a budget when the budget is announced. So the budget 2022 help reduce the tax burden of the SSE in any manner? First of all, Shekhar ji, thank you so much for having me on the panel. And with respect to your budget thing that you said, the expectation, the legitimate expectation of people that their tax burden will be reduced year-on-year basis, I'll say it is a little misplaced given the economic and the overall scenario right now. See, for the past 2 years or so, we are facing a lot of challenges with respect to COVID. The government is very tight on funds insofar as they have to maintain, they have to ensure that facilities with respect to hospitalization, with respect to availability of oxygen, and for COVID vaccination also, they are allocating a huge amount of funds for all these activities. So expecting them to give you a tax cut in such scenarios, I will say it is a little misplaced. Moreover, if I see the trend for the past 5-6 years, the slab rates have basically remained same. The general slab of 2.5 lakhs, which has been there, it is since there for last 7-8 years. So we cannot expect any significant reduction from the government in that end. Having said that, yes, there are certain benefits. The benefits that I'll be talking about is with respect to surcharge. So presently, with respect to people who are taxable at stat rates, there are 4 tiers of surcharge that we have. Up to a total income of rupees 50 lakhs, they are not required to pay any surcharge. Above 50 lakhs and between 1 crore, they're required to pay a surcharge of 10%. Above 1 crore and up to 2 crores, they're required to pay a surcharge of 15%. Above 2 crores and below 5 crores, they're required to pay a surcharge of 25%. And if the person's total income is more than rupees 5 crore, they are required to pay a surcharge of 37%. This multi-tier surcharge was introduced by our current finance minister, only Nirmala Sitharaman, in her first budget that she presented in July 2019. So after that, considering the developments that took place, so she had to cut down the surcharge rates for selected incomes. The incomes on which she cut down the surcharge rates were long-term capital gains, which are taxable under section 112A, and short-term capital gain under section 111A. Basically, the capital gains which are arising from transfer of listed equity shares or units of equity-oriented mutual fund, on which we pay securities transaction tax at the time of purchase as well as at the time of sale. So with respect to those incomes, the surcharge rate was capped at 15% initially.
And afterwards in the budget, when dividend distribution tax was abolished and dividend was taxable in the hands of the shareholder, so she capped the rate of surcharge at 15% in respect of that dividend income also. So presently what was happening was, in respect of my long-term capital gain under section 112A, short-term capital gain under section 111A and dividend income, I was required to pay a maximum surcharge of 15%. The higher rates of surcharge of 25% and 37% were not applicable to me. Why this budget, what has happened is, the finance minister has said that all kinds of long-term capital gains, not specifically 112A, all kinds of long-term capital gains will be taxed at such, the rate of surcharge in respect of such long-term capital gains has been capped at 15%. As in, see, before this budget, if I am having a long-term capital gain from sale of any house property, or from sale of any unlisted shares, or from sale of, let us say, jewelry, so those 4 surcharge rates of 10, 15, 25 and 37 were applicable to me. But why this budget, all kinds of long-term capital gains, whether I'm earning from listed equity shares, listed units of equity-oriented mutual fund, or any other kind of investment, the surcharge rate has been capped at 15%. Secondly, some changes have been made in the budget, wherein primarily they have tried to, take the tax rates or the surcharge rates with respect to cooperative societies in par with domestic companies. Earlier, cooperative societies, they were liable to pay a surcharge of 12% if their total income exceeded rupees 1 crore. But now the law that has been proposed is that just like in the case of a domestic company, a cooperative society will also be liable to pay a two-year surcharge, which will be 7% if the total income is between 1 crore and 10 crores. And if the total income is more than 10 crores, then 12%. One very key takeaway and one very beneficial thing, considering that we are talking about SMEs, is that there was a section called as section 115 BAB, which was introduced in 2019 through an ordinance that provided a new manufacturing company to pay a concessional tax rate of 15%. So under that section, we were supposed to get the company incorporated till 31st March 2013. But government has, tried to extend that benefit, and they're saying that if you incorporate the company till 31st March 2014, you will still be eligible to take benefit of section 115 BAB. Basically, the sunset clause that would have got triggered if there would have been no such amendment, that is now being extended to 1 more year. So people who are, of the opinion or who are of the plans that they want to incorporate a manufacturing company in short future, so they have a benefit that they have an extended time period for that. They can plan to open a manufacturing company till 1 more year and still be entitled to a beneficial tax rate of 15%, which is very less considering the assessee is a company assessee. So majorly, these are the these are the key takeaways that we can take in respect of the tax rates. Largely, everything has remained same, but here and there, certain small benefits have been provided. The plus side is that no tax rates have been increased. And slightly on the negative side, एक इंडियन की या एक इंसान की हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है भाई कुछ तो कम कर दो, तो कुछ ऐसे तो कम इन्होंने किया नहीं है, बट आप पॉजिटिवली देखो तो कुछ इन्होंने बढ़ाया भी नहीं है. Understood. So thank you for your inputs. So the next question is very interesting in point of me. I mean, so one thing is talk about about everywhere is crypto tax. So what's the latest that we have got on cryptocurrency? We have a lot on cryptocurrency. And I guess it won't be a surprise if the things that I'll be sharing is already something that the audience would be knowing. And there might be also people in the audiences who would be knowing even better than what I am knowing about the cryptocurrency. So see, there is a general saying that we say that whenever something new comes in, we first try to deny it कि अच्छा नहीं है. But कोई मानता तो है नहीं. There are people who do not even accept that opinion. Government initially said few time back that we do not recognize cryptocurrency. People were investing blindly in bitcoins and other all kind of cryptocurrency, and government did not give any recognition whatsoever. Even RBI at some point of time said that if you're investing in bitcoins and etc., you're investing at your own risk. We do not give any kind of recognition to any kind of cryptocurrency. But having said that, the quantum of the transactions, the volume of the transaction, the regularity of the transactions, I won't say it is increasing linearly, it is increasing exponentially. उसमें linear increase भी नहीं है, सीधा exponential increase है, because there are people who have earned a lot of amounts of cryptocurrency in a very short notice. So that gain that people are earning, that has attracted the attention of a lot of people, and people are investing blindly in cryptocurrencies.
Yes, there are certain people who have suffered losses as well, but people are earning and people are investing and they're earning. Recently, we heard something like that there is some cryptocurrency by the group of Squid Games also, which cryptocurrency got nullified in a very short notice. So पहले मना करने के बाद चीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग इतना पैसा कमा रहे तो हम कैसे टैक्स ना लें, तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था. बट जो एटीट्यूड गवर्नमेंट ने दिखाया है, सी if you want to encourage investments, you should charge tax but give some certain concessions or charge a lower rate of tax. With respect to cryptocurrency, government does not want to give any relaxation whatsoever. They know it's a very highly risky area. They do not want to lower down their revenues by giving set-offs of the losses that people might incur, but they are of the opinion that we will take tax on the income that you earn. There was a meme floating on social media once the crypto tax was introduced that was saying कि भाई Nirmala Sitharaman ma'am was saying that your income is my income, but your losses are your losses. अगर आपकी income होगी तो मैं tax दूंगी, लेकिन अगर आपके losses होंगे तो आप book तो I won't do anything on it. So with respect to cryptocurrency, the one important thing that we need to notice is the law does not use the word cryptocurrency. It uses the word virtual digital asset. So basically, with the advent of technology and the kind of things that are happening these days, who knows what sort of investment might creep in future time. अभी तो cryptocurrency की बात करें, पता नहीं 4-5 साल बाद कोई और virtual digital asset आ जाए. So they very smartly drafted the law saying that the asset is a virtual digital asset. So the virtual digital asset includes cryptocurrency in its scope, and in future, if any new form of investment is introduced, just in the manner like cryptocurrency has been there, so that is also a part of it. So they've introduced a new section 115 BBH, and they have charged it flat at the rate of 30%. They are saying that on your cryptocurrency, we'll charge flat 30% tax. The one thing that they are saying that you can deduct is the actual amount that you invested. Let us suppose I invested 50,000 and I have earned 25. Let us suppose I've invested 50,000 and I'm earning 2.5 lakhs. So they are saying that you have to pay tax on the net 2 lakhs amount. You have to pay tax at flat 30%. You are not allowed to deduct any sort of expenditure other than the cost of the amount, the cost of the investment. The surprising thing is you are not allowed to set off your losses at all. In case from a particular transaction, if you're earning, if you're incurring certain losses, you cannot set off that loss against cryptocurrency income itself. वो भी नहीं कर सकते आप. जिससे income tax में generally क्या होता है that let us suppose I am carrying on a speculative business, and if I am incurring losses from a speculative business, I can set off my losses from speculative business against income of a speculative business. But यहाँ पे वो flexibility नहीं है. मतलब losses from cryptocurrency is as good as a casual loss. For a casual loss, let us suppose I am doing certain kind of betting, or I am doing certain kind of betting in a horse race. If I am incurring any kind of loss from there, the income tax law does not allow me any kind of set off. So they have taken that similar approach, and they are saying that with respect to the losses on cryptocurrency, it's a dead loss for you. We will not allow you any sort of adjustment for the losses whatsoever. But if you're earning an income, we'll tax it at a flat 30%. Moreover, they have introduced withholding provisions under section 194S in respect of this, that TDS will be deducted at the rate of 1% in respect of this income. Apart from that, they have also introduced a provision wherein they are saying that if you are gifting cryptocurrency to any other person, or let me use the word virtual digital asset. If you are gifting virtual digital asset to any person, the recipient would be liable to pay tax on the amount of gift if the amount of gift exceeds rupees 50,000. Basically, the gift taxation provisions that we have under section 56 to 10 of the Income Tax Act, the scope of that section is being expanded to include virtual digital asset in also its scope. So with respect to cryptocurrency, the government's objective is कि भाई tax जितो जो income है उस पे tax ले लो, जितना ज़्यादा हो सकता है tax ले लो, but losses का किसी तरह से कोई भी adjustment नहीं है. So the meme that is being shared, I think it is the most appropriate thing that is to be said in this regard to conclude the discussion on cryptocurrency. That your profits are my profits and I will tax that, but your losses are your losses. I will not give any adjustment for it. That is the opinion of the finance minister. Having said that, it paves the way that the government is finally recognizing a virtual digital asset or a cryptocurrency, because till now they have been in a denial mode where they haven't recognized cryptocurrency at all. Now they are finally recognizing it and bringing a mechanism for taxing it. So now you can see various institutions, companies launching their digital currency, their virtual digital asset cryptocurrency, and people investing in it.
But having said that, there needs to be a strong regulation mechanism, maybe SEBI coming out with some legislation so that the investment of the people is safeguarded, because we all know cryptocurrency is like you are playing a game blindfolded. So there has to be a proper regulation mechanism. Now we have a regulation mechanism insofar as tax is concerned, but there has to be a regulation mechanism so as to ensure the security of the funds that I'm investing in. So in future, may regulations come? Yeah, there has to be, because otherwise there will be a lot of fraud that might be that people might lose out their investment, because in cryptocurrency you do not have a visibility as to what actually you are investing in. Okay, so thank you so much for that clarification on crypto. So that my next question is, every budget brings with itself some new provisions. So as far as withholding tax TDS is concerned, so has the tradition continued this time around as well? See, TDS withholding tax, people who actually practice in TDS, they simply say that the provisions of TDS are very tedious to actually follow in the real life. And it is a fact, because the number of sections, the list of sections, I also teach CA students, so they also get troubled by the fact that sections kab khatam honge, because the list is endless and this list is increasing day by day. If I go back to 2019, 2 sections were introduced, section 194 and 194N by the current finance minister only. Then 2020, she again brought a new section 194O. Last year, she brought 2 new sections, 194P and 194Q. And now she has again brought 2 new sections, 194R and 194S. So 194S is a new section, and as I said, it deals with cryptocurrency. The payments involved over there will be subject to TDS at the rate of 1%. Next, they are saying that with respect to section 194S, the section 194S has been introduced with respect to cryptocurrency. TDS will be deducted at the rate of 1%. So that's one withholding tax. They're getting a good amount over there. Secondly, there is a new section, as I was saying, section 194R. What is section 194R? Section 194R, a new section that has been proposed, is that where if I have any business partners or any agents or any kind of people who are, helping me increasing my business, and I'm giving them certain benefits. So those benefits which I am passing on to such independent persons during the course of business and professions, those are supposed to be taxed in the hands of the recipient, yes, but at the same time now TDS implications will be imposed on them. If I read the language, it says bill proposes to insert new section 194R, wherein any person who is responsible for paying any benefit of work visit to a resident arising from carrying out of a business or profession, whether convertible into money or not, shall be deducted in respect of such benefits of work visits at the rate of 10%, provided the value exceeds at least 20,000. So one more tax that is there. This is bound to impact a lot of doctors, because a lot of doctors receive a lot of benefits or work visits from the pharmaceutical companies. So that is one transaction that will be highly covered under this. Secondly, at times, all these mutual funds, they give a lot of benefits. They give a lot of free trips to their business partners. So those will be covered over here. Apart from that, certain changes have been made in the existing provisions as well. With respect to sale and purchase of immovable property, we have section 194 IA. So whenever we talk about immovable property, apart from the actual selling consideration, a value called as stamp duty value comes into picture. So across all the provisions of the income tax law, we say that the government tends to refer to the stamp duty value of the property if the selling price of the property is less. But under section 194 IA, it has always been maintained that if the selling price is rupees 50 lakhs or more, TDS is required to be deducted at the rate of 1% when the purchaser makes the payment to the seller, and that 1% is to be calculated on selling price. Example, let us suppose I am selling a property today. The stamp duty value of the property is 75 lakhs and the selling price of the property is rupees 60 lakhs. So the buyer who has to make payment, he will deduct TDS at 1% of selling price, having completely disregarded the value of the stamp duty value of the property. But now the section is proposed to be amended, saying that 1% tax needs to be deducted at selling price or stamp duty value, whichever is higher. So basically, they have just increased the tax burden, or basically the TDS scope, by saying that you need to deduct tax at 1% of actual sale consideration or stamp duty value, whichever tends to be higher. So if your selling price 60 lakhs, so stamp duty value 75 lakhs. So earlier it used to be 1% of 60 lakhs, but now it will be 1% of 60 lakhs or 75 lakhs, whichever is higher. So
जो आपने बात बोली ना कि जो ट्रेडिशन है टीडीएस में प्रोविजंस को बदलने का, नई चीजें लाने का, मेरे को नहीं लगता जब तक हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस ट्रेडिशन को डिसकंटिन्यू करेंगी, वो इसको कंटिन्यू ही करेंगी। थोड़ी टाइम की बात है 194Z तक भी आ जाएगा, उसके बाद हमें शायद सेक्शन सुनने के लिए मिले 194ZA, ZB, ZC, ये लाइन इसी तरह से चलती रहेगी जिस तरह से का लगता है। So that was interesting, and thank you so much for the input. So I have next question. Before that, I just wanted to go to Divya ma'am. Divya ma'am, I have one question for you. So what will be the interest repercussions in case excess of ITC is claimed, and what is the time limit to rectify the same on the GST portal? Before answering this question, Shekharji, I can see so many people have joined in. I would really request all the participants to be interactive. We can see all the chats. I would request you, if you understand something or if you have any doubt or concerns, do raise your concerns in the chat box. We'll definitely address the same in the session itself. So now coming over to your question, Shekharji, what is the time limit and the interest thing in the ITC? This is a welcome change actually done by the budget 2022. Firstly, earlier it was allowed that if I talk in respect to financial year 21-22, okay, if I have omitted to take any kind of input tax credit, or if I have omitted to enter my sale, etc., then I could have done the same in the till the time I fill in the return for the September 2022, that is September month of the following financial year. But there was always a debate among the experts that it is only the 30th September date. But while some said that it is still 20th October, that is the 3B, the due date for the 3B for the month of September. So to end this all kind of discussion and to bring about uniformity, the government has actually increased this time to 30th November. That means if I have missed out to take any kind of input tax credit, say suppose I had a purchase of rupees 1 lakh, having a tax of rupees 18,000, which was supposed to be entered in say April 2021. But after this financial year 21-22, maybe I realized the same in say July 22 ki I have missed on to taking this input of 18,000. So I could have earlier taken either by the same either by the 30th September or as per some experts in the 3B of the September month. बट अब क्या है, अब एक बेनिफिशियल प्रोविजन ऐड हो गया है, एक बेनिफिट दे दिया गया टैक्स पेयर्स को कि अब 30th नवंबर, अब डेट भी स्पेसिफाई कर दी गई है ताकि ये जो ओपिनियंस फ्रेम हो रहे थे एक्सपर्ट्स के, नाउ नो मोर ओपिनियन विल बी देयर, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दैट इज ही कैन क्लेम द इनपुट टिल 30th नवंबर. द सेम वेज आपका क्रेडिट नोट आपको इशू करना है, डेबिट नोट आपको इशू करना है, कोई भी आपको रिटर्न में चेंज करना है, रिटर्न अमेंड करनी, यू कैन डू द सेम बाय 30th नवंबर. सो अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल गया, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ द टैक्स पेयर एज वेल एज द प्रोफेशनल्स हु आर फाइलिंग द रिटर्न ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर्स. So this date or the annual return, whichever is earlier, so basis that you can amend your returns or you can rectify your returns as well. Another beneficial provision in respect to ITC is section 50 bracket 3. Earlier it was said कि सपोज जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा परचेज था 18,000 का, मेरा टैक्स बनता था, बट हो सकता है मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, 18,000 की जगह 1,80,000 की फिगर 3B में डाल के इनपुट क्लेम कर लिया. नाउ दिस इनपुट इज एक्सेस इन व्हाट आई वाज सपोज्ड टू टेक. मुझे सिर्फ 18,000 लेना था, बट एक्चुअल में मेरे 3B में इट इज नाउ 1,80,000. सो व्हाट शुड आई डू? मेरे नोटिस में भी नहीं आया. नाउ व्हाट गवर्नमेंट यूज्ड टू डू अर्लियर वाज, और व्हाट डिपार्टमेंट यूज्ड टू डू वाज, कि अगर इस तरह का एक्सेस आ रहा था एंड इट वाज नॉट मैचिंग विद योर 2A, व्हिच एक्चुअली वुड नॉट बी मैचिंग बिकॉज आपका एग्जैक्ट अमाउंट था 18,000 और आपने ले लिया 1,80,000. तो ऐसे सिचुएशन में नोटिस आ रहे थे और आपको रिवर्स भी करना पड़ रहा था अमाउंट. रिवर्सल जो था वो विद इंटरेस्ट हो रहा था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आपका जो इनपुट है अगर 1,80,000 का, वो आपके क्रेडिट लेजर में रखा हुआ है या आपने उसको यूज कर लिया है. तो अब गवर्नमेंट व्हाट इट हैज सेड इज, it also said the same in the 45th GST Council meeting held in September 2021, but now formally अब फाइनेंस बिल का पार्ट बन गया है. वो क्या कह रहे हैं हम कि ये सेक्शन 50 ब्रैकेट 3 कहता है कि अगर आपने गलत अवेल किया एंड यूटिलाइज किया ना इनपुट को, तो आप पे इंटरेस्ट के रिपरकशंस आएंगे. अगर आपने सिर्फ अवेल किया बट यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको सिर्फ रिवर्सल करना होगा, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट. दैट मींस इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप.
बिकॉज बहुत सारे जजमेंट से बहुत सारे बेसिकली केस ले डाउन किए गए थे ऑनरेबल कोर्ट्स के आगे। तो हर किसी में एक क्वेश्चन आ रहा था, अगर वो आज भी मेरे क्रेडिट लेजर में उसी हेड में रखा हुआ है तो व्हाई शुड आई पे द इंटरेस्ट ऑन द सेम, बिकॉज इंटरेस्ट तो मेरी पॉकेट कॉस्ट हो गई बेसिकली मेरी। तो वो कॉस्ट को हटाने के लिए और एक बेनिफिट पास ऑन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप किया, एंड इट इज वेरी वेलकमिंग स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द टैक्सपेयर्स एज वेल एज द प्रोफेशनल फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्सपेयर्स। Yeah, definitely, it's beneficial for all of the stakeholders. So, do you think that it is good to block the portal for delayed filling of the GST returns? I think it is good. Reason being, if you would have seen कि 31st December को हमारी income tax में deadline थी ITR file करने की, and this was for the very first time in the history कि आपकी deadline extend नहीं हुई. Maybe by this step, the honorable finance minister is indicating कि आपको अगर काम दिया गया है ना तो आपको उसको within time finish करना है. Because we people are having a tendency say कि 20th of the following month is the due date of filing 3B. तो हम ये नहीं समझते 20th तक भरनी है, हम समझते 20th को ही भरनी है 3B. We also are very lenient on our part. So अगर penalties होंगी, late fees होगी और कुछ इस तरह के repercussions होंगे, तभी business persons भी जो है वो इस चीज को seriously लेंगे कि हाँ हमें timely भरनी है return. हम अगर थोड़ा सा भी delay करेंगे तो वो हमारे business पे impact करेगा. So one of the provision was introduced earlier itself in basically rule number 59(6). It said कि अगर आपने 3B file नहीं करी ना, then you cannot file your GSTR one of the following month. And now similar kind of change has been introduced in section number 39(10). ठीक है, उसमें क्या कहा कि if you have not filed your GSTR1, you cannot file your 3B. That means एक interlinkages create कर दी है आपकी कि if you have not filed your 3B, you cannot file your 1. If you have not filed your 1, you cannot file your 3B. Basis that क्या होगा कि आपके लिए ये मजबूरी हो जाएगी, चाहे टैक्स पेयर है या प्रोफेशनल फाइलिंग ऑन बिहाफ टैक्स पेयर है, कि आपको रिटर्न्स टाइमली भरनी है. क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं भरोगे, फर्स्टली आपके परचेजर को क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा, रीजन बिंग उसके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर. Ma'am, you got on mute. Yeah. Timely legal details डालनी है, and I think it will ensure that all the people will be doing their compliance in timely manner and in a better and accurate manner. So I think it is a good provision. Okay. So also in news, it was shown that welcome changes has been brought regarding the transfer of cash balance. So can you just enlighten the viewers about the same? Bilkul, sure. Actually, in the portal, one major drawback was there was no feature of the amendment. ठीक है, अब when there is no feature of the amendment or rectification of your returns, then a question arise कि अगर हमसे छोटी clerical mistake भी हो जाए, then what do we do? How do we rectify the same? So SMA, when suppose we are creating a challan so that we can file our tax in the 3B, if we have made the wrong payment in the wrong head, basically we have made the payment in the wrong head, then what do we do? क्या हमें refund लेने के लिए department भागना पड़ेगा? Because refund लेना is not an easy task. When you have to go to department, submit a lot of documents, then follow the entire process, and then you get the refund. So a lot of time and energy is utilized in order to take that particular refund. So a best change which was introduced, which I think it was very useful, was introduction of PMT 09. अगर मैंने टैक्स पे किया पोर्टल पे, से सपोज CGST और SGST में डालना था, बट आई हैव बाय डिफॉल्ट एंटर्ड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन द IGST हेड. सो ऑन द पोर्टल इटसेल्फ आई कैन ट्रांसफर द अमाउंट इन द अदर हेड. एंड नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन वाज कि सपोज कीजिए आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, but in one of the branches there's a lot of cash, lot of amount there in the cash ledger, but while in the other branches it is not there. So अब if I see it from the entity perspective, उसका working capital block हो जाएगा. रीजन भी एक एंटिटी के पास तो बहुत ज्यादा कैश है जिसको वो यूज नहीं कर पा रहा है, बाकी एंटिटीज जिसके पास कैश नहीं उसको अननेसेसरी कैश पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को. So now what government has done is basically in section number 49(10), यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी distinct entity है, that means your branch is there, and if आपको पास ऑन करना है ये कैश लेजर में जो एक्स्ट्रा बैलेंस है, एज आई सेड कि सपोज ब्रांच ए में मेरे पास 10 लाख का कैश बैलेंस खड़ा हुआ था कैश लेजर में, तो वो मैं अपनी बाकी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड
certain मतलब after fulfilling certain condition, like मेरी branch में जिसमें ये cash खड़ा है, वहाँ पे I'm not having any kind of unpaid liability and any other kind of restriction or the condition which might come up later on. So that 10 lakhs can be very easily shifted to other branches, resulting into lesser consumption of the working capital and a better efficient fund management. So again, this is a very, very welcome step at the by the government for the taxpayers. Okay, thanks for the input, ma'am. So before coming to you, actually, I just wanted to go to ask to Vijender sir. So Vijender sir, I have one question for you. Another important key takeaways from the budget has been introduced of updated returns. So what is the updated return all about and how it's different from the existing provisions under the law? See, the finance minister, when started her budget speech, the first tax proposal that she had to talk about was updated return. So as and when she was talking about updated return, there was a lot of confusion in the mind. Is she talking about revision of return? Because updated return if I go just by the literal interpretation of the words, it means you're updating your return. The return that you've already submitted, you're trying to update that return. And this is exactly what we do in a revised return. But then when we listened to her and when we actually went through the documents, the finance bill, the memorandum, so we usse pata chala that it's a completely new scheme that the government is coming out with. See, the existing provisions of the income tax law allow me to file a belated return or revise the return that I have already filled till 31st December of the relevant assessment year. Obviously, right now the due dates are being extended, keeping in view the time and again disruptions due to COVID. But ideally, what has been written in the law as of now is that you can revise your return till 31st December of the relevant assessment year, or you can file a belated return till 31st December of the relevant assessment year. Now they are coming up with the concept of updated return. And in the updated return, they are saying that in case you have not disclosed proper income, if you are coming to know that there is certain more income that was not actually disclosed by you earlier, and this date of 31st December of relevant assessment year has expired, you can still file an updated return. One interesting thing, once again, in the benefit of the government, that you cannot file an updated return if it has the effect of any disadvantage to the government but advantage to you, as in मेरी tax liability कम हो गई है, या मेरा loss बढ़ रहा है, या मेरे को कुछ refund मिल रहा है. In cases के अंदर मैं updated return नहीं भर सकता. The updated return can be submitted in a situation only which results in benefit to the government, which has the effect of increasing my liability. Then only I can file a belated an updated return. But the thing that is coming over here is, why is this concept of updated return required all of a sudden? The point is, the government has said that we have developed a lot of tools to track your income. In the past, we were hearing that the government officials were, taking a good look at your social media handles, your Facebook profile, your Insta profile, etc., just to check what is your standard of living, where are you actually going, just taking an idea as to what kind of assets do you possess, including a car, are you undertaking any financial, any foreign trips or not. So basically, they are trying to get an estimate as to how much you are earning and whether the spending or the social life that you're living, is it in sync with the income that you're disclosing or not. They are saying that you can file an updated return provided we already haven't initiated any action of search, seizure, or escaped assessment, that section 147 that we talk about. It needs to be seen as to when we can actually file the updated return. Time ही बताएगा ये वाली चीज, क्योंकि जितना सेक्शन को देख के लगता है कि अगर आपके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट हो चुका है, यू कैन नॉट फाइल एन अपडेटेड रिटर्न. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंटेंशन तो नहीं है कि एक असेसी ने खुद अपनी इनकम डिस्क्लोज करी नहीं, और अब उसे डर लगने लग गया है कि शायद ऑफिसर इस इनकम को पकड़ लेगा. So before the officer, detects this escaped income or the income that you haven't reported earlier, why not we file an updated return ताकि government को हाथों हाथ tax चढ़ा दे. Maybe to reduce the litigation which will be involved, कि आपको notice आएगा, आप notice का reply दोगे, officer उसका order pass करेगा, rather than going through the entire process which will take time, जिसमें tax आने में भी time लगेगा और उसके अंदर litigation भी होगा.
अगर असेसी को अब बस डर बैठ गया दिमाग में कि जो उसने इनकम छुपाई हुई है या जो इनकम उसने पहले डिस्क्लोज नहीं की हुई है, ऑफिसर बस उसको पकड़ने वाला है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि उन्हें बिना सरदर्दी के आसानी से टैक्स मिल जाए, रादर देन ऑफिसर बार बार उससे टैक्स निकलाए, असेसी खुद ही आके सबमिट कर दे डिटेल्स को। इन दी अपडेटेड रिटर्न दे आर सेइंग दैट आप अपडेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हो, आप असेसमेंट ईयर के एंड से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। You can file an updated return for next 2 years from the end of the relevant assessment year. अब अपडेटेड रिटर्न है तो मतलब मेरे को जो मेरा एक्चुअल टैक्स पेबल है, जो पहले मैंने पे नहीं किया, वो देना ही देना है, मेरे को मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट देना ही देना है। बट सिर्फ बात यहाँ नहीं खत्म होती है, दे आर चार्जिंग समथिंग एक्स्ट्रा। सी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम दैट आई हैडंट डिस्क्लोज्ड अर्लियर, उस पे जो भी टैक्स बनता है एप्लीकेबल इंटरेस्ट है, दैट आई हैव टू डिस्चार्ज व्हाइल सबमिटिंग माय अपडेटेड रिटर्न। मोरओवर आपको कुछ एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, एंड दैट एडिशनल टैक्स इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट, कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, इट इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। एडिशनल टैक्स का अमाउंट कितना है? अगर आपने 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद बट टिल 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, इस टाइम पीरियड के दौरान आपने अपडेटेड रिटर्न भरी है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे अ टैक्स ऑफ 25%, you are required to pay an additional tax of 25% of the actual tax and interest that is being paid by you. एंड अगर आपने असेसमेंट ईयर के 1 साल के बाद और 2 साल के बीच में अगर आपने अपडेटेड रिटर्न भरी है, the percentage of this additional tax goes from 25% to 50%. So in my opinion, what I can foresee from this section is that where the officer is just about to issue you a notice or he is about to reach a conclusion that you have actually escaped some income from taxation, rather than officer taking an action against you, why don't you voluntarily come and disclose that income to us, pay the tax, interest, and pay a good amount of additional tax, then we won't take any action against you. So if an assessee is sure कि अब उसके केस कोई ना कोई proceeding आने वाली है, so in order to save himself, rather going then through the entire notice वाला route or reply of your order, आप voluntarily ले आओ और अपना tax जमा करा दो। Yeah. Interesting. So, PGBP and capital gains, these are two most significant area of income tax. So, is there any major amendment that has been proposed to made in this area wide budget? Wide budget 2022? Surprisingly, this time around, there isn't anything significant that we have on under PGBP and capital gains. Otherwise, it has always been a tradition that there is always some highlight section in PGBP or capital gains. But this time around, there hasn't been any major amendment in any of the topics under the PGBP law or the capital gains law. There have been certain cosmetic changes, but there hasn't been anything major. Some of the cosmetic changes that have been incorporated are, there was a very recent judgment which said that under the income tax, if you are paying surcharge, you can debit that surcharge to the P&L account. You can debit that cess to the P&L account. See, when we compute our PGBP income, we prepare a P&L account. And any kind of direct tax is not allowed to be debited to the P&L account. मैं income tax amount अपने P&L account पे debit नहीं कर सकता. कोर्ट्स के कुछ ऐसे जजमेंट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा है तो आप सिर्फ बेसिक इनकम टैक्स P&L में डेबिट नहीं कर सकते. In case you are paying surcharge on income tax, or you are paying health and education cess on income tax, you can debit that to your P&L account, which is completely absurd because चाहे कलेक्शन आपसे सरचार्ज के नाम से हो जाए, चाहे सेसेस के नाम से हो जाए या टैक्स के नाम से हो जाए, अल्टीमेटली सारा पैसा जब इनकम टैक्स के अंदर रिकवर किया जा रहा है, that entire amount inclusive of surcharge and cesses is your income tax liability. So that clarification has been given by the government that any type of tax that is being imposed under the income tax law by the name of tax, surcharge or cess cannot be debited to the P&L account. Secondly, there is a section called as section 43B, which says that if you're maintaining your books of accounts on accrual basis, you can debit certain expenditures to the P&L account only if you have actually paid that amount, and the due date for paying that amount is allowed till the last date of filing of return of income. Under that, there comes a point that if you have taken any loan from any bank, financial institution, etc., that interest on such loan taken from bank or financial institution can be allowed to be deducted under the P&L account only if you have actually paid the same till the last date of filing of return of income. There were certain people, what they did was they converted their outstanding interest into some debentures. And they said that now we are converting outstanding interest into a debenture. That means we have paid this liability. So the clarification has been given that if your outstanding interest is being converted into a debenture,
this conversion does not amount to actual payment. Actually में कोई payment हुई नहीं है. You cannot debit the amount until and unless you have actually paid the amount. Just because you are converting this outstanding interest into a cash loan or a debenture, that will not be allowed as deduction. So majorly these are the things. Apart from that, they have clarified that any kind of offenses that you are doing, whether under Indian law or under foreign law, any kind of compounding fee that you are paying. So all these kind of expenditures are not allowed to be debited. So as I said, there hasn't been anything major that has been changed under PGBP or capital gain. There have been certain clarifications which have been given. Apart from that, the law remains same, and it is a good indication that the government is keeping a stable environment for the businesses to flourish. Regular changes actually impacts the flow of the business. We get distracted from our business thing and we start focusing on the tax thing that changes have come. So in this financial year, businesses can be freed from this aspect that the law remains same. They can focus on the business aspect. The rest assured कि tax का law जो पहले था वही आगे है. Okay, so thank you for input. So I have another question also. The salaried class has been majorly confined to the boundaries of their places for the last 2 years due to work from home mandate. So do they have any to cheer about? See, with respect to salaried class, we have always said that they cannot demand anything. They are just, they just have to accept whatever is given to them. ये एक कंप्लीट नोशन होता है कि आप कुछ मांग नहीं सकते, आपको जो दिया जा रहा है वही आपको करना है. और पीपल वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि जो उन्हें सेक्शन 16(1)(a) में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, शायद वो इंक्रीज कर देंगे. बेचारे 2 साल से बाहर ही नहीं निकले, ऑफिस शुरू होता है वापस बंद हो जाता है, ऑफिस शुरू होता है वापस बंद हो जाता है. And if we talk to people who are in job, they really want to go out to their offices because they have been fed up of doing work from home, and they actually say that our productivity has gone down, and moreover, we are spending much more hours on the work when we are working from home. So sadly, there is nothing for them, not at all. The only thing with respect to salaried class is that there is a section called as Section 80 CCD. That is deduction for contribution to a new pension scheme, notified pension scheme, Atal Pension Yojana. So for whatever employer contributes to that fund, deduction is available for employer's contribution under Section 80 CCD2. And Section 80 CCD2 earlier used to read that you will be allowed deduction of 10% of your salary for the employer's contribution. Very recently, government had changed that law, and they said that in respect of central government employees, deduction under Section 80 CCD2 shall be 14% of salary. For other employees, it shall be 10% of salary. So the change that has been made is that now state government employees will also be entitled to the higher benefit of 14%. Central government and state government employees have been, brought at par. Earlier, there was a differentiation between central government and state government employee. A central government employee was taking benefit of 14%, whereas a state government employee could only take benefit of 10%. Now, both of them can take benefit of 14%. Apart from that, there is nothing which should, make the salaried class happy. They have always been burdened with heavy taxes. They will continue to be burdened with heavy taxes. So with respect to the salaried person, it's a one-way communication from this budget. Yes, it is a one-way communication. That is what I said. You cannot demand anything. Whatever is given to you, ले लो. जो भी आएगा, और आपको इतना भी राइट नहीं है कि आप अपना टैक्स खुद पे कर सको. आपका टैक्स कट के ही आएगा. A salaried person does not have even a right कि मैं कुछ फील कर सकूं that let us suppose I am earning a salary of 30 लाख और मेरा टैक्स बनता है 6-7 लाख का. मेरे को फील भी नहीं आएगी मैंने 6-7 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिया है, क्योंकि मेरे अकाउंट से कभी भी पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा नहीं. मेरा तो हमेशा कट के ही पैसा मिलेगा. So one more question to you. Has the budget 2022 introduced any provisions which might be bring some relief to the senior citizens or a disabled people of the society? Senior citizens, once again, no. No benefit for senior citizens. As it is, a lot of benefits have been allowed to senior citizens earlier. See, we cannot expect government to just keep on giving you benefits from time to time. Government has a lot of challenges to fulfill. They have to see defense requirements, they have to see COVID-related things. So for senior citizens, there is nothing new in the budget. The benefits which they were entitled to earlier, those are over here. कुछ हटाया नहीं है, कुछ नया लाया भी नहीं गया है. But the point is, with respect to disabled person, there is a good clarification that has been given. It deals with Section 80DD. See, if somebody in my family is a disabled person, and that person is dependent on me,
I keep on thinking कि यार कल को मेरे को कुछ हो गया तो इस पर्सन का कौन ध्यान रखेगा. So you are allowed to take certain insurance policies with insurance companies, which says that in the event of death of the person, the disabled person will be given certain annuity, will be given certain payments. So you can take benefit under section 80DD only if जिस पर्सन के ऊपर डिसेबल्ड पर्सन डिपेंडेंट है उसकी डेथ होती है तब. अगर मानो जिस पर्सन के ऊपर डिसेबल्ड पर्सन डिपेंडेंट है वो अलाइव है और उसके बाद आज की डेट में डिसेबल्ड पर्सन को कोई एन्युटी या कुछ अमाउंट मिलता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल है, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलती है. तो व्हाट हैपेंड वाज एक रिट पिटीशन आई थी और उस रिट पिटीशन में एक बात कही गई कि लेट अस सपोज अ फादर इज ऑफ 65 years of age and he has a son who is 30 years of age and that son is disabled and the son is not in a position to earn any income of his own. He is dependent on the father, and father having attained the age of 65 years, it is not possible for the father to work actively and take care of the financial needs of the disabled person. So if you are taking any insurance policy which is giving an annuity to the disabled person at the time when the person on whom he is dependent is of age, is of good age, जैसे 65 years की मैंने बात की, फादर की 65 है और अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा डिसेबल्ड पर्सन को अपने एक्टिविटीज के लिए मिलता है तो वहां तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए. तो ऐसा लॉ में था नहीं, तो इसी चीज को लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है. मैं थोड़ा सा ना एक्सट्रैक्ट आपके सामने मेमोरेंडम से डालता हूं ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी. This is the extract of the memorandum. So in the writ petition number 1107 of 2017, Ravi Agarwal versus Union of India and another, Justice A.K. Sikri observed that there could be harsh cases where handicapped dependents may need payment of annuity or lump sum basis even during the lifetime of their parents or guardians. It was observed that the center may take into consideration all the aspects, including those where a disabled dependent might need payment on annuity or lump sum basis even during the lifetime of the parents or the guardians. Therefore, in order to remove this genuine hardship, it is proposed to allow the deduction under the said section also during the lifetime, that is upon attaining age of 60 years or more of the individual or the member of the HUF in whose name subscription to the scheme has been made and where payment or deposit has been discontinued. So basically now if the insurance company is giving annuity or any lump sum payment to the disabled person will be entitled to exemption as well as deduction even if the person on whom he is dependent, their parent or the guardian, is still alive, provided the age of the parent or the guardian is 60 years or more. So that is it. Otherwise there is nothing new with respect to senior citizens or disabled persons in the law. Okay. So thank you so much for your input. I'll just go to Divya ma'am. Divya ma'am, I have a question for you. Do you think that the changes on the GST portal is aligned properly with the law, or the notification of the amendments in the rule is having a complete backing from the statutory law? Shekharji, in this regard, I would like to ask the audience first. What do you think? Is it actually aligned? The GST portal, is it actually aligned with the law? Whatever is stated in law is the same implemented on the GST portal. And second question I would like to put to my audience is, do you think what is written in the law is also there in the GST rules, or something which is there in the GST rule is backed by the GST law? What do you think actually is the situation? Because as far as I can see, there is a change in all these things. Just like I said in my earlier response in respect to the returns itself, return pattern which was written as per the law was never implemented on the GST portal. And the one which was implemented on the portal was never written in the law. So there's always been, if the law is east, the portal is the west thing. But fortunately, by this budget, the changes have been made, which are now most likely is just similar to the GST portal, the things which are there on the GST portal. But still, the concern is, when I talk about GSTR, basically the rules as well as the act, generally what government tendency is that in a hush, when they want to stop certain kind of fraud activity, or when they when they are stopping the fake suppliers or the buyers, what they tend to do is they bring in certain kind of notification or the circulars which tend to change the rules,
But sometimes they forget that there needs to be a change in the law also, because without the act being modified or the amended, there cannot be rules. That is, rules, they are to be laid down in compliance to, or in backing with the statutory act. For example, if you can see section 43A, it was being introduced. It stated that you cannot take input beyond 20% more than what was being reflected in 2A. But this section was never implemented. Instead, a change in rule 36 bracket 4 was there, which stated the same thing. So certain sections which are not implemented, but its corresponding change has been done in the rules, and rules are actually followed in practice. So till date, the thing is, I also know whenever a new law comes into picture, and people also know whenever a new law comes into practice, obviously there are certain things which are rectified only over a period of time, and they cannot be rectified at the first instance itself, because just like the Rome also took a lot of time to build, same ways a new law to be implemented in this particular big country like India, obviously time needs to be taken care of, and with time various changes will be coming in. But with this, government should also ensure that act, portal, and the rules, they must go in one single direction. They should not go haywire. So till date, I think my experience is this, that the things which are on portal are different to what it has been written in the act. Very less is something, it is very less provisions are those which are like matching completely. Otherwise, if I talk about the complete return mechanism, it was different. But now by the budget, there have been certain changes which have been made, which are in line with the portal. It was a brief clarification. Thank you for that. So lastly, what is the change that is made in refund provision by this budget? Okay, see, refund has always been a sought after topic, because so many people are always there, like we have to take the refund, be it for the inverted duty structure or be it for the exports, etc. But now in this refund, section 54, it basically says that for the special entities like UNO, etc., the time frame in which they can apply for the refund, it has been increased from 6 months to 2 years, which is a welcome step. Another welcome step is, like earlier in SEZ, there was a concept of relevant date. Whenever you have to apply it for the refund, there is a time frame from a relevant date which the taxpayer needs to see. So this particular time frame, this relevant date, in case of SEZ, was also always litigated or was disputed, that what is the actual date. We have to see the return filing date, etc. So there was a lot of issues which are going on. So the same has been clarified through this thing. Okay, because now section 54 is amended accordingly. But one major drawback that has been done, or one significant change which is actually not favorable for the taxpayers point of view, but yes, definitely favorable in case of revenue collection and not giving refund to the taxpayer, and that is in the benefit of the government. It is, earlier the government was having the power to withhold your refund. See, if I'm eligible to have a refund of rupees 1 lakh, government could withhold certain part of it, or even in fact the complete of the refund, if in case I had applied for the refund in case of the accumulated ITC. That is, when my input tax credit was accumulated and I was taking the refund for the same. So in that situation, government had the power to withhold the refund, provided I was having a certain unpaid liability or some other dues were pending at my end towards the government. But now this condition of accumulated ITC has been removed. That means now for the each and every kind of refund, be it for the cash ledger, be it for the exports, or be it for the accumulated ITC, for each and every kind of the refund which the taxpayer is basically is applying for, in all these kind of refunds, the government is now, basically the department is now having the power to withhold the same, provided you have not given the entire tax liability to the government, or there is certain kind of non-compliance done on your part, or if you are supposed to pay certain amount to the government, there was certain demand against you, and if you're not paid the same, then the government can actually withhold your refund. And then once that particular part it is being basically paid to the government, then only the refund will be sanctioned to the assessee. So definitely this is a good provision, although not good for the taxpayer, but still, to ensure that the people are compliant and in future they become more compliant towards their compliances in the GST. Obviously, it is a good step, and definitely the UNO thing, the time extension for them, and the clarification in respect to the SEZ is a very good step and initiative at the part of the government. Good to hear that. Thank you so much for the clarification. I'll just go to Vijender sir.
So, Vijender sir, I have a question for you. Has the budget 2022 provide any relief in form of some new deduction or exemption, or has any existing deduction or exemption has been removed? Okay, so insofar as exemptions and deductions are concerned, there isn't anything new that has been. There isn't any new that has been introduced by the government as such. ना तो उन्होंने किसी एग्जिस्टिंग चीज के स्कोप को कर्टेल किया है और ना कुछ नया बेनिफिट अलाउ किया है, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट नीड्स टू बी नोटेड. It is with respect to deduction under section 80 EEA. Back in 2009, when Nirmala Sitharaman ma'am came into power, she introduced a provision saying that if you are taking a loan for purchase of a residential house property, and you are getting that loan sanctioned during financial year 1920, you will be allowed deduction for the interest for which you could not take deduction under section 24B. आपको जिस घर के लिए इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन सेक्शन 24B में नहीं मिल पाया, उस कंपोनेंट के लिए आप सेक्शन 80 EA में बेनिफिट एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड 80 EA में एक बहुत हैंडसम अमाउंट का डिडक्शन था. द डिडक्शन वाज ₹1,50,000. So let us suppose I am doing a job and today I take a house. Obviously I can make certain payments for the funds that I have, but I would be taking a loan. So the person taking the loan, he would not be allowed full benefit in respect of the interest that is being paid by him under section 24B, because section 24B limits deduction at ₹2 lakh where the property is self-occupied. So for the extra amount, I could claim deduction of ₹1.5 lakh under section 80 EA, provided I was fulfilling the conditions which were given under section 80 EA. Some of those conditions were that the value of the property, the stamp duty value of the property has to be less than 45 lakhs. When the loan is being sanctioned on that date, I should not have any property in my name. So initially when the law was introduced in financial year 1920, the law said that your loans should be sanctioned during financial year 1920. Then in budget 20, it was said that the loan can be sanctioned during 2021 as well. Then in budget 21, it was said that the loan can be sanctioned during 21-22 as well. So basically, I was allowed benefit under section 80 EA if my loan is sanctioned during the period from 1st April 2019 to 31st March 2022, because of the two amendments that took place after subsequent introduction of the section. But there is nothing that has been said with respect to section 80 EA in the current section, in the current budget. So इसका ultimately impact ये हुआ कि इस section का sunset clause आ गया. In the sense that जिन लोगों ने इस सेक्शन में आज मतलब जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में लोन सैंक्शन करवाया है, वो फ्यूचर में इस सेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है. बट फॉर एनी न्यू पर्सन हु विल बी परचेजिंग अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट द लोन इज बीइंग सैंक्शनड ऑन और आफ्टर 1st April 2022, there is no benefit that will be allowed to you. So people who have already taken loans and already have purchased their houses, they will continue to be eligible for benefit under section 80 EA, but there will be no new entry in this section. Apart from that, a small change has been made under section 80 IAC that deals with benefit to eligible startups. Section 80 IAC allows eligible startups to take benefit with respect to the profits that are being earned by them for 3 consecutive years. They have the option to choose these 3 consecutive years out of their first 10 years. Starting के 10 साल में से वो किन्हीं भी 3 साल में 100% benefit ले सकते हैं for their profits. So if I share the screen with you, eligible startup जो था ना, eligible startup के context में law used to say certain thing. Eligible startup means a company or a limited liability partnership which is engaged in, yeah. Screen is not visible. Okay, screen is not visible. Never mind. I'll just read out the same. Basically, what was happening was that the eligible startup had to be incorporated on or after the 1st day of April 2016, but before the 1st day of April 2022. Basically, the eligible startup had to commence its operations between 1st April 2016 to 31st March 2022. But because of repeated disruptions caused due to COVID and other reasons, government has said that they are increasing the time by 1 more year. Due to COVID pandemic, there have been delays in setting up of such units. In order to factor in such delay and promote such eligible startup, it is proposed to amend the provisions of section 80 IAC of the Act to extend the period of incorporation of eligible startups up to 31st March 2023.
That means I can still, incorporate a new eligible startup and be entitled to benefit under Section 80 IEC. The quantum of benefit remains same. The only thing was that the validity of this section was getting expired on 31st March 2022. It has been extended by 1 more year. So once again, the benefit that used to be available under Section 80 EEA, that will not be available to new entrants. And for eligible startups, they have 1 more year to start up their operations as of now. Apart from that, there isn't anything significant in the area of exemptions or deductions. Okay. So that was a very detailed explanation. So was the hype with respect to the new legislative framework for special economic zone? For special economic zones, if we go see the concept of special economic zones, we had borrowed from China, considering that they export the products in huge quantities at a very competitive price. So the special economic zone law that was framed, it was framed in the year 2005. The act that we have, it is with respect to 2005. Multiple benefits followed under the direct tax laws as well as under the indirect tax laws. For the direct tax laws, I have benefit under Section 10AA for SEZ units. I have benefit under Section 80 IAB for SEZ developers. Under the old laws, service tax laws, excise laws, I had always benefits for SEZ units. Under the GST law also, we have the concept of zero-rated supply, wherein the dealer supplying goods or services to a SEZ dealer can claim credit on his inward leg, even though he's not paying anything on the outward leg. If the credit is used well and good, not used, you can take refund of the same. See, the times are changing, the things are changing, but the SEZ law is almost a 20-year-old law now. Not exactly 20, but 17-year-old law now. So they are saying that we will be overhauling this legislation. They are saying we will come out with a new legislation, and that new legislation will address the needs and demands of today. And a very optimistic timeline has been set up. They are saying that we propose to implement the new law by 30th September 2022, which is like just 6-7 months away. So SEZs have always been a very key part insofar as exports are concerned. Our balance of trade, balance of payment situations always depend on the exports that we are doing. And the number of SEZs are also growing. So keeping that thing in consideration, it is a very welcome move that they're addressing the needs of the current situation. They are updating a law which was introduced 17 years back. Hopeful that it will not contain any aggressive provisions. If it contains good provisions, it's a win-win situation for people who are operating in SEZ or who are planning to operate in SEZ. Yeah. So thank you so much for your inputs. And to conclude, what's your overall opinion about the budget 2022? See, there is never a single answer as to how the budget is. It depends upon how you see it. It's a glass that you can say it's half empty, you can say it's half full. Considering this budget, see, we cannot be always demanding with respect to as to how much tax cuts we will be getting in the coming year. We need to be mindful of the situations that are being faced by the government right now. They have to see a lot of things with respect to COVID, as I said. The entire COVID vaccination chain that is being running in India, it is being sponsored by government. You can go to government authorized places and get yourself vaccinated for no amount. Now they have started a booster shot. Now they'll be going to kids. So government has to keep in mind that a lot of capital expenditure has to be incurred on those things. Apart from that, a lot of expenditure is being incurred on defense things also, because we always have the challenges of Pakistan and China are two noisy neighbors who are troubling us time and again. So you have to take that into consideration. On the plus side, what things that we have seen is there isn't anything too aggressive in the budget so as to demotivate the people who are doing in business. Insofar as income tax is concerned, whatever changes I discussed with you, there isn't anything negative that would demotivate me. See, at times there are provisions introduced in the budget which would take more tax from me as compared to the tax that I'm paying right now. So there is nothing in the budget as such. Plus, the government seems to be very committed to this aspect that they will be developing infrastructure. If I am not wrong, I read in the budget also that they are planning to lay down new national highways in excess of 25,000 kilometers. They are planning to set up new airports. They are planning to start new trains. So they are basically focusing on the fundamental aspect of the economy. They are addressing the infrastructural and developmental needs of the economy. So all this is bound to increase the confidence of the businessmen, because you can see that for
if you want certain capital assets to be there in future, for that you have to compromise right now. And we are not compromising anything in terms of any additional tax. What we are compromising is that we haven't got any substantial tax benefit that we want to expect, but actually is not valid in the current situation. As simple as that. So it's a very good budget insofar as the investors are concerned, because the budget addresses the infrastructural and developmental needs of the economy, and the government has allocated a good amount of money towards that. There isn't anything huge aggressive under the income tax laws provisions so as to demotivate us or to as to worry us. Yes, there is a tax on cryptocurrency, but that is also a very welcome move. Why? Till now, government has been in a mood of denial where they were not recognizing the existence of cryptocurrency. They were asking people not to invest in cryptocurrency. Now they are saying, okay, we will take tax on the cryptocurrency. So the regulation mechanism around cryptocurrency will increase, and it will allow people who have a risk appetite. Let me just reiterate my point. People who have a risk appetite, because cryptocurrencies are highly risky. So virtual digital assets, cryptocurrency, people investing in these kind of assets, they have been given a motivation, yes, that we are recognizing it. Moreover, if I'm not wrong, there was a concept, something called as RBI will be launching their own digital currency. So government is recognizing the impact of digitalization that will happen on the economy. They understand the maximum things which people used to do physically or even on a laptop, those things are being shifted in our hands to a mobile. So they are reducing customs duty on mobile phones also, if I'm not wrong. So overall, they are welcoming the new path that is coming towards digitalization, and they are recognizing the new trends which are taking place in the economy, and there isn't anything negative in the budget that would demotivate me. So pluses are more, and I guess minuses are less. Yeah. So thank you so much for your Most welcome. And so similarly, just wanted to ask Divya ma'am also, what is the overall opinion about this budget from 2022 budget? Sir, as per the indirect taxes being concerned, I think it is basically very good for the genuine and the bona fide buyers, bona fide dealers. But at the same point of time, it is like a warning bell or an alarm for all those who are engaged in certain fraud activities or who are not genuine or bona fide. For them, this budget is an alarming budget. But overall, if you talk in respect to the country and the business, overall, it is a beneficial thing, because certain provisions which were actually much needed provisions and which gave much needed relief to the taxpayers, they have been introduced through this particular budget. So overall, when I talk in respect to the GST and the indirect area, it is very nice. And as Vijendra sir said, overall also from the investor point of view, it is very good. We cannot every time expect like what additional reduction we will be getting, but sometimes we have to be in a neutral position, like for the future, if you want certain good things in the future, you have to sit down right now and be satisfied what is given to you. Okay. So to Divya ma'am and Vijendra sir, thank you so much for sharing your valuable inputs. I'm sure our audience would have got very insightful information. So thank you so much for that. And so again, so we have another speaker with us. So I would like to welcome and introduce Mr. Ankit Khatwa. So my colleague Ankit Khatwa is a GTM manager for North Zone and associated with Tally for more than 4 years. So he has got experience in Tally as a product and the related domain expertise also. He has area of expertise including knowledge of GST domain and Tally product. So he will be showcasing the newly released and functionally rich product Tally Prime, which is simplifies the auditing and compliance. So over to you, Ankit. Yeah. Thank you, Shekhar, and I'm really privileged to be this part of the session. And before that, Ankit, I'm just holding you. There is one question. I think that question should definitely related to you. So we'll also take that question after your session. Yeah, we'll take a question end of the session. So I really want to thank you, CA Tejendraji and CA Divyaji. The way they have explained the budget is really, really nice, and I have received a lot of information through this session, and मुझे भी ये लगता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उनको भी मिला होगा, and it is going to be help them in a positive manner also. So
With constraint of time, I'm just going to share my screen, and I'll take a few things related to Tally latest release 2.0. So I hope my screen is visible. Shekhar, can you just confirm my screen is visible or not? Yes, your screen is visible, Ankit. Yeah, thank you. जैसा भी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल करेंसी के ऊपर बात हो रही है. डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करने की जो बात है उसके ऊपर काफी महत्व दिया जा रहा है, एंड उसके ऊपर काफी एफर्ट लगाया जा रहा है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग डिजिटल, एंड डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है. तो यही काम जो है हम लास्ट 30 इयर्स से कर रहे हैं. इन 3 decades वी हैव बीन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर आवर एमएसएमई, सो दैट एमएसएमई जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू वो काम को आसान कर पाए, एंड उसको जो है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके उसको सक्सेसफुल कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, एंड देन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उसको और आगे लेके जा पाए. सो जैसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करते रहते हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देन और अकाउंट प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स एडवोकेट हैं, तो वो भी ये सॉफ्टवेयर को जो है हमारे टैली सॉफ्टवेयर को काफी एक्सेप्ट करते हैं, एंड इसको आगे प्रमोट करते हैं. इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी फीडबैक देके आज एक मुकाम तक पहुंचा चुके हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है आज वाइडली यूज्ड हो रहा है. सो मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा. आई विल टॉक अबाउट वेरी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके थ्रू जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स है, वो कैसे फायदा उठा पाएंगे और काम को कैसे आसान कर पाएंगे, कैसे और ये सॉफ्टवेयर को और एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने ऑडिट को और आसान कर सकते हैं, एंड कस्टमर जो है उनको कैसे टाइमली सर्विस दे पाएंगे, एंड और इफेक्टिवली कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे. सो उसके ऊपर आई विल टेक फ्यू थिंग्स. सो डेफिनेटली जब टैली प्राइम जो डिजाइन हुआ है वो जो प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए काफी चीजें डिजाइन हुई. There are many things which is helping consultant in a much better way, which is definitely saving a lot of time. जो टाइम है, पहले जो हम ERP की अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, ERP में जो टाइम थोड़ा सा लगता था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था, उस काम को कैसे और बेटर हो पाएगा. एक टेक्नोलॉजी को यूज करना और उसको इफेक्टिवली यूज करना, जैसे दीपा मैम ने कहा कि आप हमें कंप्लायंस भी फॉलो करना है, हमें डेडलाइन भी फॉलो करना है, तो दोनों चीजों को फॉलो करके चलना है. खाली अगर आप एक चीज आप फॉलो कर रहे हैं, दूसरा चीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमें ध्यान देना है. इफेक्टिव तरीके से काम को करना है. तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैसे और बेहतर यूज हो पाएगा उसके ऊपर ये जो टैली प्राइम 2.0 बहुत ज्यादा एक एडवांटेज दे रहा है कि ऑडिट के ड्यूरेशन पे अगर आपका टाइम बच रहा है, अगर आप इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, काम को कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा. का जो आपके क्लाइंट्स है उनको रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, एंड जो 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 क्लाइंट का ऑपरेशन है उसको सिंप्लीफाई करके आप थोड़ा सा उनको बेटर तरीके से उनको सर्व कर पाएंगे. सो टैली प्राइम 2.0 में हम क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें जो है रिपोर्ट्स को देखना और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना और उस रिपोर्ट्स को परमानेंटली आपको सेव करना, वो एक रिक्वायरमेंट था. उसके ऊपर हमने काम किया है और इसको हम 2.0 जो रिलीज है अभी टैली प्राइम 2.0 उस पर हम डिलीवर किए हैं. इसमें मैंने जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी टैक्स कंसल्टेंट, जितने भी अकाउंटेंट प्रोफेशनल से मैंने बात किया है अभी तक, ये रिलीज को आते हुए अभी 5 से 6 महीने हो चुका है. टैली प्राइम को आते हुए 1-1.5 साल हो रहा है. तो लेकिन ये जो फीचर है, स्पेशली जो सेव व्यू, रिपोर्ट्स को कैसे आप अपने हिसाब से बना के सेव करके उसको हमेशा के लिए उस व्यू में आपको उस रिपोर्ट को देखने का जो एक ऑप्शन है मिला है टैली प्राइम 2.0 में, सभी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड मैं आप भी अगर अभी एक्सेस नहीं किया है तो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज कि आप इसको यूज कीजिए, बहुत समय बचेगा. एवरीबडी इज टेलिंग इन द सेम लाइन दैट इट इज सेविंग देयर टाइम, लॉट ऑफ टाइम they are managed to save because of these features, and नेविगेट फास्टर विद GoTo. यस, मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा कि GoTo एक का ऑप्शन एक हमें मिल रहा है टैली प्राइम 2.0 में.
टैली प्राइम में भी है, टैली प्राइम 2.0 लेटेस्ट रिलीज है उस पे। सो इसमें एक सेंटर में हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसके थ्रू आप मल्टीटास्किंग कर लीजिए, आप रिपोर्ट्स टू रिपोर्ट्स में आप जंप कर लीजिए, आप एक ट्रांजेक्शन में रह के एक दूसरे ट्रांजेक्शन में जंप कर लीजिए। सो ये मल्टीटास्किंग जो फैसिलिटी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत समय आपका बचा रहा है एंड आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप चीजों को और आसान तरीके से उसको आप कर पाएं और इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाएं जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। रिटर्न का प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिसेस चैलेंजेस, यस, इसके ऊपर मैं 2 मिनट और स्पेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। रिटर्न प्रिपरेशन के ड्यूरेशन पे अगर आप ERP 9 है, अभी ERP 9 के अगेंस्ट में टैली प्राइम में कैसे आप उस चीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड इंटरप्शन जो आता है काम करने के ड्यूरेशन पे, तो उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट में काफी चीजें इम्प्लीमेंट किया गया है सो दैट आप मल्टीटास्किंग जो है बेटर तरीके से कर पाएंगे। और रिलेवेंट ग्रुप में रिलेवेंट चीजों को क्लब कर दिया गया है सो दैट एक नया यूजर भी आता है तो उसको कोई गाइड नहीं करेगा, वो अपने आप चीजों को ड्राइव कर पाएगा। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, कुछ ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर जो है खुद ब खुद जो है प्रमोट करता है, खुद ब खुद जो है एक आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ थिंग जो है वो बिल्ट इन हुआ है सो दैट एक यूजर जो है, एक नया यूजर है तो उसको ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली वो स्टार्ट करेगा। और यही सिंप्लिसिटी जो है हम ओवर द ईयर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला जो पर्सन है जरूरी नहीं है बहुत टेक्निकल टेक से भी हो या टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, अगर उसको सॉफ्टवेयर चलाना है तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद जो है ये चीजों को उसको आगे ऑप्शन दे या उसको इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिले उसको वो खुद रन कर पाए। एंड पावरफुल रिपोर्टिंग इंजन, इज डेफिनेटली पावरफुल, जो रिपोर्टिंग जो मैकेनिज्म है उसको बहुत रोबस्ट किया गया है सो दैट रिपोर्ट देखने का जो ऑप्शन है उसमें जो रिक्वायर्ड एडवांटेजेस है हो सकता है और टाइमली लेके हम उसको बिजनेसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी दिया गया है। एंड एज ए प्रोफेशनल अगर मैं कंपनी के डेटा को फास्ट देख पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपने जितने भी कंपनी का डेटा है, मल्टीपल कंपनीज का डेटा में जो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सब काम करते हैं, तो उस डेटा को एक्सेस करना और उस डेटा को डेटा तक पहुंच के उसको फास्ट एक्सेस करना वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था। एंड वो डेटा से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी और रिलेटेड है, जैसे माइग्रेट, वो डेटा का हेल्थ चेक किया है कि उस डेटा किस रिलीज से किस रिलीज में आ रहा है, उसको माइग्रेशन रिक्वायर्ड है या डाउनग्रेड रिक्वायर्ड है, तो वो जो इंटेलिजेंस है उसको भी बिल्ट इन किया गया है इस प्रोडक्ट के अंदर। सो आपके पास 50 कंपनी का डेटा है, 100 कंपनी का डेटा है, डेटा पाथ को लोकेट करने का जो एक एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं टैली प्राइम 2.0 में हमने बहुत बहुत ज्यादा ईज आउट कर दिया है और उसका भी काफी फायदा मिल रहा है। एंड जो इनवॉइस, अगर आप एक सर्टेन इनवॉइस में है, अगर आपको उसमें कुछ GST का इंफॉर्मेशन देखना है या आपको उसमें TCS का इंफॉर्मेशन देखना है, TDS का इंफॉर्मेशन, ऑन द गो आप जो है उसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों एक ऑप्शन है आपके पास कि को एग्जिस्टिंग करके भी चला सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते। लेट्स से एक एम्बिग्यूटी है कि टैली प्राइम में मैं अगर शिफ्ट कर जाता हूं तो उसमें क्या मेरे को इमीडिएट जो है जो चीज मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी था टैली ERP9 में, क्या मेरे को मिलेगा, क्या मैं उतना जल्दी सेटल डाउन हो पाऊंगा, क्या मैं उसको इतनी जल्दी रन कर पाऊंगा, उसमें ऐसी कोई चेंज तो नहीं है जिसको मेरे को टाइम लगेगा सीखने के लिए। इसी एम्बिग्यूटी के लिए हम ये ऑप्शन भी दे रहे हैं हमारे सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हम कह रहे हैं कि आप टैली प्राइम भी चलाइए, टैली ERP9 भी चलाइए, दोनों चीजें को एग्जिस्टिंगली आप दोनों चीजें चला सकते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर सो दैट आप दोनों को एक्सप्लोर करना, टैली प्राइम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे क्लाइंट जो है टैली प्राइम में माइग्रेट हो चुके हैं, उनका भी डेटा आता होगा आपके पास, तो आप उनको टैली प्राइम में ओपन करके जो है आप उसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके टैली प्राइम में कर सकते हैं। टैली ERP9 में लेट्स से आपका कोई डेटा आ रहा है, टैली प्राइम अगर आप ERP है तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे टैली प्राइम में अगर आपने एक बार माइग्रेट किया तो आपको टैली प्राइम में इतने सारी चीजें एडवांटेजेस आपको मिल रहा है। सो टैली ERP9 में कोई अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो टैली प्राइम में ही आपका सारा काम हो जाएगा, टैली ERP9 पे आपको आने की भी जरूरत ही नहीं है। एंड अगर कुछ रिपोर्ट्स को आपको किसी भी ब्राउजर पे देखना है, जैसे किसी आप ऑफिस में नहीं है, ऑफिस के बाहर हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप क्लाइंट्स का डेटा आप देखना चाहते हैं, तो क्लाइंट भी आपको एक्सेस दे सकता है आपकी ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे आप रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में। एंड वाइस वर्सा, अगर आप रिपोर्ट आप अपनी क्लाइंट्स को अगर शो करना चाहते हैं
दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप उनको भी आप जो है रिपोर्ट ब्राउजर पे भी एक्सेस देके इमीडिएटली अगर कुछ चेंज हुआ है आप उनको नोटिफाई करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एक दो रिपोर्ट में आपको क्विकली जो सेव व्यू में जो रिपोर्ट एनहांस्ड हुआ है टैली प्राइम में, कि आप रिपोर्ट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, उसको परमानेंट देख सकते हैं और बार बार वो एक्टिविटी को ना करना पड़े। एक बार आपने कर दिया उसको, आपने एक बार आपने कस्टमाइज कर दिया आपकी परव्यू में जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिट के पॉइंट ड्यूरेशन पे बहुत सारे रिपोर्ट आप देखते हैं। सो उसको कैसे ईज आउट किया है, मैं उसको एक बार प्रैक्टिकली करके एक बार एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट एंड उसको आप दोबारा जो है बहुत सारे सिनारियो के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ। आप ट्रायल बैलेंस का डिफॉल्ट व्यू ये है, ट्रायल बैलेंस जो है अभी इसी व्यू में दिखता है, लेकिन आप उसको चाहते हैं कि लेट्स से इसमें ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, आप चाहते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो भी आ जाए, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ जाए। सो होता क्या था कि आप जैसे इस चीज को करके आप पहले ERP 9 की अगर मैं बात करूं तो ये रिपोर्ट में आपने देखा, आपने एनालाइज किया जो भी आप क्लाइंट के डेटा में एनालाइज करना चाहते हैं, तो जैसे स्कैप करके बाहर आते थे, होता क्या था, फिर आप जब जाते थे इस रिपोर्ट के अंदर, वो फिर डिफॉल्ट फॉर्मेट में आपको मिलता था, जो टैली के डिफॉल्ट रिपोर्टिंग इंजन है जिस हिसाब से वो प्रेजेंट करता है, उस फॉर्मेट में आपको दिखता था। तो उससे इससे क्या होता था कि बहुत समय आपका फिर उसी एक्टिविटी के लिए दोबारा लगाना पड़ता था। सो जो मेरा पहला पॉइंट था कि हम कैसे टाइम कैसे बचा सकते हैं और इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं और बिजनेस के लिए हम क्लाइंट को कितने जल्दी हम क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। सो ये चीज के ऊपर हमने जब ये प्रैक्टिकल एक रिक्वायरमेंट था, तो हमने क्या किया, टैली प्राइम 2.0 के अंदर हमने कहा कि ये रिपोर्ट अगर आपने जिस हिसाब से आपने कस्टमाइज किया है F12 से, रेंज से, डिफरेंट एंगल पे जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज है, आप जब उसको कस्टमाइज करते हैं, आप एक काम कीजिए, इस रिपोर्ट को सेव कर लीजिए। तो ये रिपोर्ट सेव होने के कारण क्या होगा कि ये रिपोर्ट जो है हमेशा के लिए सेव हो गया। सो ये खाली एक कंपनी में हम नहीं करते हैं, आप मल्टीपल कंपनी में करते हैं। एक अनुमान एक जो प्रोफेशनल है वो 50-100 कंपनी में ऑडिट करते हैं, तो उस सिनेरियो में आप समझ के देखिए कि आपको कितना समय आप हर कंपनी में इसी एक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना आप इस रिपोर्ट को सेव कर लें, सो दैट आप अगर ये ट्रायल बैलेंस को आप ये नाम जो है आप कुछ भी कस्टमाइज करके दे सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट को आप डिफॉल्ट व्यू में रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट में भी रख सकते हैं, अगर डिफॉल्ट में नहीं रखना चाहते हैं दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो खाली एक ऑप्शन नहीं है, खाली आप रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स आल्सो इनटू इट। So one thing is you can keep this report into the default view, and in additional view, what other things are available. You can apply this to this company, or you can apply this function command to rest of the company which are available in this computer. So what will happen कि आप जितनी भी कंपनी आपकी आपके फोल्डर में है, टैली कंपनी इस कंप्यूटर के अंदर है, सो उस कंपनी में भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आप समझ के देखिए कि आप एक कंपनी में आप एक काम करते हैं एंड इसको आप अप्लाई करते रहे हैं मल्टीपल कंपनीज में, तो कितना टाइम जो है आपका बचने वाला है इस एक्टिविटी से। तो इसी वजह से ये रिपोर्ट को इस फंक्शन को काफी जो है जो प्रोफेशनल्स है काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड उसको इसकी पॉजिटिविटी की जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, आई विल लुक इनटू दिस। तो ये जो है मेरा रिपोर्ट जो है अब सेव हो चुका है। तो अगर मैं आता हूँ, आप देखिए कि मेरा ये जो रिपोर्ट है ये डिफॉल्ट व्यू में अब सेव हो गया है, ट्रायल बैलेंस का जो है। तो अब मैं इजीली जो है इस अब हर कंपनी में मेरे को करना नहीं पड़ेगा, मैं एक ही कंपनी के अंदर मैंने कर दिया और बाकी सभी कंपनी के लिए वो कर दिया, तो मेरा जो है काम आसान हो गया। देन एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से आप बहुत सारी कंपनी में जो है ये चेक करते हैं कि जो कैश अमाउंट है, जो कैश पेमेंट है, वो कितनी जो है 10,000 के ऊपर है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, 10,000 के ऊपर जो है कितनी पेमेंट हुई है, सो दैट आप उसको ट्रैक कर पाए, चेक कर पाए। तो इसलिए काफी स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो एक तो है कि आप ड्रिल डाउन करके कितने सारी उस पे आते हैं, अंदर आते हैं, फिर आपको पीरियड सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से किस डेट से किस डेट तक देखना है आपको। तो लेट से मैं एक कुछ पीरियड ले रहा हूँ। सो ये स्टेप देखिए कि कितना जो है मेरा मिनिमाइज हो जा रहा है।
सो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये सेव व्यू कितना मेरा काम का है और जरूरी है। अगर मैं ये चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं रेंज पे जाता हूँ, देन वाउचर टाइप में वाउचर फिर वाउचर टाइप करता हूँ, देन फिर इसमें नेम कंटेनिंग पेमेंट करता हूँ, एंड फिर इसमें मैं वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000। तो अब मेरे को जो है ये रिपोर्ट मिल रहा है। सो क्यों ना मैं इसको सेव कर दूं, और जो मैंने अभी कम से कम 6-7 स्टेप मैंने फॉलो किया था, तो उस वो जो है 6-7 स्टेप जो है मेरे को हर दिन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं हर बारी नहीं करना पड़ेगा, हर कंपनी के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नाम भी दे सकता हूँ कि कैश अमाउंट, कैश 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 पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। तो मेरा ये रिपोर्ट जो है सेव हो गया परमानेंट, और इसको मैं जाके गो टू से भी देख सकता हूँ, और ये रिपोर्ट जो है मेरा परमानेंट सेव हो गया, और मेरे को और दोबारा बार बार इस रिपोर्ट को बनाना नहीं पड़ेगा, जो मैं अभी 6-7 स्टेप में जाके कर रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो काम है सेव रिपोर्ट से कितना आसान हो गया, और मैं इस काम को कैसे परफेक्टली कर पा रहा हूँ। सो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक मैं बैलेंस शीट में हूँ, बैलेंस शीट का मतलब मैं अगर बैलेंस शीट का कुछ कंपैरेटिव व्यू देखना चाहता हूँ, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि आप बैलेंस शीट में गए, आपने कंपैरेटिव व्यू आपको देखना है, आपने ऑटो कॉलम किया, देन आपको ईयरली किया, देन आपकी ईयरली व्यू में जो है आपका बैलेंस शीट आ गया। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो इस तरीके से जो सेव व्यू जो है आपको एक बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप रिपोर्ट को जो है अपने हिसाब से सेव कीजिए, एंड अगर सभी कंपनी के लिए करना चाहते हैं तो सभी कंपनी के लिए कर दीजिए, एंड अगर खाली इसी कंपनी के लिए करना चाहते हैं तो इसी कंपनी के लिए कर लीजिए। और जो जो रिपोर्ट आपको रखता है, रिलीवेंट रिपोर्ट रखता है, आप हमेशा उसको एक्सेस करते हैं, एंड वो आपकी जरूरत की चीज है, हर कंपनी के लिए जरूरत की चीज है, तो आप उसको सेव करके रख लीजिए। इससे काफी टाइम जो है आपका सेव होगा, एंड डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना स्टेप मेरा बच रहा है एक रिपोर्ट को जो मैं जाके देख रहा हूँ, ड्रिल डाउन करके उसको सेव कर दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए परमानेंट सेव होकर रह जा रहा है। और अगर उसको आपको उस रिपोर्ट को अगर डिलीट करना है, यस, आप उस रिपोर्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्रबल शूटिंग से जाके अगर आपको ये डिलीट व्यू से सेव व्यू से डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर उस कंपनी से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। देन सेव व्यू के अंदर भी आपको वो ऑप्शन मिलता है डिलीट करने के लिए, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मेनी थिंग्स। सो क्या मैं सेव व्यू को मॉडिफाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स कैन बी सेव्ड अंडर सेव व्यू? F12 कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड सेलेक्ट करके, अगर आप GSTR1 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, GSTR1 आप हर महीने बनाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं कुछ करके फिर वो अपने डिफॉल्ट व्यू में चला जाता है। तो पीरियड सेलेक्ट करके आप एक, अगर आपने सेलेक्ट सेव कर दिया तो आपको उस रिपोर्ट को जाके फिर पीरियड सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, खाली GSTR1 और पीरियड जो भी दिया है आपने उसको करके सेलेक्ट कर लीजिए, वो रिपोर्ट आपके सामने होगा। कैन आई मॉडिफाई? ये डेफिनेटली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कैन आई डिलीट? यस, आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेविगेट फास्टर विद GoTo। सो GoTo इज जस्ट अमेजिंग, आप प्लीज उसको एक्सप्लोर कीजिए। एंड ये आपको बहुत सारा ऑप्शन, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोस्पेक्टिव, ये बहुत ही मतलब अच्छा एक मतलब ऑप्शन दे रहा है कि ड्यूरिंग आप ऑडिट के ड्यूरेशन पे बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल में एक ही जस्ट एग्जांपल आई एम जस्ट पुटिंग यू सो दैट यू कैन रिलेट, एंड आप बाकी चीजें आप उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं करंट एसेट्स में हूँ, बैलेंस शीट में हूँ, और नहीं सॉरी फिक्स एसेट्स में हूँ, और मेरे को किसी भी एक हेड के अंदर मेरे को मैं देख रहा हूँ और मुझे इमीडिएटली एक वो हो रहा है, फील हो रहा है कि मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन की। सो व्हाट अर्लियर वी यूज्ड टू डू, इससे कम्प्लीटली बाहर आते थे, फिर ट्रांजैक्शन वाउचर एंट्री में जाते थे, वाउचर एंट्री से आके जो है हम फिर इस रिपोर्ट में आते थे। तो क्यों आज जो है GoTo के फंक्शन से मैं Alt G किया, जो टॉप में दिख रहा है सेंटर में, तो Alt G करने से वो क्या हो रहा है कि मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट वाउचर। तो मैं क्रिएट वाउचर पे जाके अब मैं F7 करके और मैं एक जो है डेप्रिसिएशन की एंट्री करके मैं फिर वापस आ सकता हूँ। डेप्रिसिएशन लेट से मैंने 10,000 रुपये का कर रहा हूँ, कंप्यूटर से हेड में कर रहा हूँ, और करके मैंने सेव किया,
और करने के बाद मुझे बैलेंस शीट में ही आना है। तो मैंने एस्केप किया, मैं बैलेंस शीट में फिर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक रिपोर्ट में रह के एक ट्रांजेक्शन में चला गया, और अगर मुझे किसी एक रिपोर्ट में रह के और एक रिपोर्ट में जाना है, लेट्स मेरे को ट्रायल बैलेंस में जाना है, तो मैं ट्रायल बैलेंस में चला गया। मेरे को अगर पीएनएल में जाना है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। सो रिपोर्ट टू रिपोर्ट जाना और एक एंट्री से एक ट्रांजैक्शन में एक मतलब एक रिपोर्ट में सॉरी एक रिपोर्ट में लेके एक ट्रांजैक्शन में जाना, एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन में जाना, जंप करना, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे को उस स्क्रीन से एग्जिस्टिंग काम को बिना डिस्टर्ब करते हुए मैं दूसरे एक्टिविटी में मैं जा पा रहा हूँ और उस टास्क को कर पा रहा हूँ। सो गो टू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रांजेक्शन टू रिपोर्ट पे जाना, ट्रांजेक्शन टू अनदर ट्रांजेक्शन में जाना, और रिपोर्ट देखना इतना जस्ट अमेजिंग हो गया है कि आप वो जो टिपिकल हियरार्की फॉलो करते थे कि ये मेरे को डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, मेरे को ग्रुप समरी में जाना है, अगर सन्डी डेटर्स की चीजें देखनी है या रिलेटिव साइज फैक्टर देखना है, बहुत सारी रिपोर्ट जो है मेरे को ड्रिल डाउन करके जाना पड़ता था। अब जो है आप उसको गो टू करना है, जैसे रिलेटिव मेरे को स्केल फैक्टर में जाना है, तो आपने क्लिक किया, आपके रिलेटिव स्केल फैक्टर जो है आपके सामने है। आपको किसी भी आपको सन्डी डेटा में जाना है, आपको किसी भी रिपोर्ट में जाना है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन में जाना है, तो आपने ऑल्ट जी किया कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है रिपीटेड ट्रांजेक्शन है। इस अमाउंट में देख, अब फ्रेट का जो 2000 अमाउंट है वो 13 बार हुआ है। एक फ्रेट का जो 500 रुपए का जो ट्रांजेक्शन है वो 13 बार हुआ है। सो लाइक दिस आप रिपोर्ट टू रिपोर्ट जंप करना, मल्टीपल रिपोर्ट को देखना, so that is also simplified in a very very efficient way. Can we see list of open reports till now? Yes, definitely. आप जो भी reports आपने open किया होगा go to के अंदर जो है आपको वो सारी रिपोर्ट दिख जाता है, आप उसको देख सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा challenges क्या है कि अभी जो अगर पुराने ERP 9 में है, अभी भी जीएसटी के रिटर्न आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, नो डाउट, और थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हमने उस पे एनहांसमेंट करना बंद कर दिया है। तो लेटेस्ट प्राइम में ही सब कुछ एनहांस हो रहा है। अगर ERP 9 में अगर आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होंगे तो अभी जैसे लगभग 6-7 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है और लगभग 20-25 मिनट टाइम जो है एक रिटर्न बनाने में टाइम लग जाता है। तो पहली चीज जो है HSN समरी टैक्स परसेंटेज वाइज नहीं है वहाँ पे। अभी जैसे रिटर्न में मैंडेटरी है कि टैक्स परसेंटेज वाइज जाना चाहिए HSN समरी में, तो उसको आप एनुअल कंप्यूटेशन के थ्रू निकालते हैं। फिर जो है HSN वैलिडेशन नहीं है, GSTN वैलिडेशन नहीं है, जेसन डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि HSN समरी वहां से नहीं निकलता है। तो फिर अलग से सारे कंपोनेंट को आप CSV में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप ऑफलाइन पोर्टल पे जाते हैं, ऑफलाइन पोर्टल पे फिर जाके जेसन क्रिएट करते हैं, जेसन क्रिएट करने के बाद फिर GSTN पोर्टल पे जाते हैं। तो इतने सारी चीजें जो है आपको ERP 9 में अब करना पड़ता है। तो क्यों ना वो सारे एक्टिविटी जो है आप प्राइम में कर लें, प्राइम में करेंगे तो आपको लगभग 1-2 स्टेप में आपका हो जाएगा, क्योंकि आप HSN वैलिडेशन आपको मिल जा रहा है एंड GSTN वैलिडेशन मिल जाता है एंड आपको HSN समरी टैक्स परसेंटेज वाइज मिल जाता है, देन आपको जेसन डायरेक्ट मिल जाता है, चाहे वो आप GSTR1 की बात करें या QRM की रिटर्न्स की बात करें, तो सब चीजें जो है एक सिंगल क्लिक में आपका टैली प्राइम से बन जाता है। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए एंड एज ए प्रोफेशनल आप इसको भली बात ही जानते हैं कि टाइम अगर बचा लिया तो काम मतलब आपने बहुत अच्छे से आप अपने कस्टमर को जो है क्लाइंट को सर्व करना और ज्यादा क्लाइंट को सर्व करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाता है। तो एक चीज और प्रॉब्लम होता है कि अगर GSTN पोर्टल पे आपने जेसन अपलोड किया, ऑफलाइन पोर्टल के थ्रू अगर आप जेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ मिस्टेक हुआ, एरर दिया, तो फिर अगेन आपको रिपीटेटिव काम करना पड़ता है। फिर जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है वो फाइल को, फिर ऑफलाइन पोर्टल पे लेके जाके वो एरर को देखना पड़ता है कि एरर किस में है, फिर उसको करेक्शन करना पड़ता है, फिर जेसन प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं, चैलेंजेस है। कहने का महत्व यही था कि आप अगर टैली प्राइम में अगर GST के रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कम समय में हो जाता है। सो HSN वैलिडेशन जो है, GSTN वैलिडेशन जो है टैली प्राइम के अंदर ही है। मैं आपको एक शॉर्ट पे दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लेजर में अगर मैं उसका GSTN अगर मैं वैलिडेट करना चाहूँ तो मेरा सिंगल क्लिक में एक राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप उसको कनेक्ट करके कर लीजिए। तो
ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिखा रहा है मेरे बुक्स ऑफ एंट्री में क्या चीज है, एंड राइट हैंड साइड में जो जीएसटीएन पोर्टल में क्या चीज है। तो इसको वेरीफाई करके इसका स्टेटस क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर पार्टी नहीं है पहली पहली बार अगर मैं उससे काम करने जा रहा हूँ तो उसका स्टेटस क्या है। तो ये एक ऑप्शन आपको इमीडिएट टैली प्राइम 2.0 में ये ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर आपको मल्टी मोड में करना है, आपको सिंगल मोड में नहीं करना है, जैसे जीएसटीएन वैलिडेट अगर एक साथ आप सभी पार्टी का करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये जो है जो रिक्वायर्ड चीज है कि आप रिटर्न प्रिपेयर करने से पहले जो है आप ये दो चीजें तो होनी चाहिए आपका, जीएसटीएन वैलिडेट और एचएसएन वैलिडेट। नहीं तो कुछ अगर एरर आता है फिर आपको दोबारा रिवर्क करना पड़ता है। तो ये इसको ध्यान रखा गया है एज पर कंप्लायंस। सो ये जो है यहाँ पे आपको एक बार लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद ये 6 घंटे तक टैली प्राइम में अपना एक्टिव रहता है। तो आपको दोबारा जो है हर बारी एचएसएन वैलिडेट, जीएसटीएन वैलिडेट या ईवे बिल प्रिपरेशन के लिए आपको नहीं एंटर करना पड़ता लॉगिन वगैरह। सो ये लॉगिन का जो एक बार वन टाइम सेटअप है। आप ईवे बिल पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको एज ए जीएसपी टैली को एज ए जीएसपी आपको सेलेक्ट करके एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है वो उसी लॉगिन क्रेडेंशियल से आपको टैली प्राइम को एक बार अगर कनेक्ट कर देते हैं, ये सब ऑनलाइन जो है इंटीग्रेशन जो हुआ है अभी ईवे बिल बनाने के लिए, एचएसएन जीएसटीएन वैलिडेशन के लिए, ये आपका काम जो है इफेक्टिवली हो जाता है और बहुत कम समय पे आप देख लेंगे हो जाता है। एचएसएन वैलिडेशन भी इम्पोर्टेंट है कि जो एचएसएन है वो आपका सही है, ये उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि स्टॉक आइटम क्रिएशन के समय पे भी आप कर सकते हैं सिंगल मोड पे, और मल्टी मोड पे भी आप एक समय पे आप वो भी कर सकते हैं। सो एक सिंगल मोड का हम देख लेते हैं एंड एक हम मल्टी मोड में देख लेते हैं। सो इससे क्लैरिफाई हो जाएगा। देन इसको जो है आप और डाउन द लाइन एक्सप्लोर करके आप इसको आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इफेक्टिव जो रिक्वायरमेंट है सभी चीजों को हमने टैली प्राइम 2.0 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। देयर आर लॉट ऑफ एनहांसमेंट हैपनिंग जो ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे ऑडिट ट्रेल की भी बात चल रही है। सो आप बहुत जल्दी ये भी देखेंगे कि हम ऑडिट ट्रेल को भी टैली प्राइम के अंदर ही लेके आने वाले हैं। सो जो चीज रिक्वायरमेंट आती जाएगी तो वो चीज हम करते रहेंगे। रिपोर्टिंग इंजन, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट को देखने का एक जो जरिया है, एक जो इंसाइट मिलना चाहिए, वो उसको भी हमने ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अगर आप देखेंगे रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट में ये 3-4 बटन जो है कंसिस्टेंट कर दिया है। एक तो चेंज व्यू, एक्सेप्शन रिपोर्ट और बेसिस ऑफ वैल्यू। इस चीज का ये जो 3 बटन है, कंसिस्टेंट बटन है, हर एक रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा एंड हर एक रिपोर्ट में इसका रिलेवेंस डिफरेंट होगा, डिफरेंट परव्यू होगा। बैलेंस शीट में क्या एक्सेप्शन हो सकता है कि मेरा नेगेटिव लेजर क्या है, ठीक है ना। तो इस सिंगल क्लिक में आपको मिल जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो है आगे बढ़ के जो है आपको ये बता रहा है कि लेट्स से आप बैलेंस शीट में आ चुके हैं तो इसमें और क्या हो सकता है, क्या क्या रिपोर्ट आप इस पे देख सकते हैं। चेंज, लेट्स से मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ, अगर मेरे को ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें मेरे को वैल्यूएशन जो है डिफॉल्ट से मेरे को डिफरेंट वैल्यूएशन में मेरे को देखना है, वैल्यूएशन पे देखना है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, डिफॉल्ट में देखना है या मेरे को फीफो में देखना है या मेरे को लास्ट परचेज कॉस्ट में देखना है। तो ये जो है ये आसान हो गया, ये बहुत आसान हो गया। तो कहने का मतलब है कि रिपोर्ट देखने का भी एनहांसमेंट हुआ है, रिपोर्ट को सेव करने का एनहांसमेंट हुआ है, रिपोर्ट्स को कैसे क्विकली देखेंगे गो टू से वो भी एनहांसमेंट हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे मैंने ये भी कहा था कि आप टैली प्राइम और ERP9 दोनों को को एग्जिस्टिंग करके भी चला सकते हैं। तो विद कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम मैं ये कहूँगा कि आप टैली प्राइम में जितने जल्दी माइग्रेट हो जाएं और इसमें काम करें बहुत अच्छा रहेगा। रिटर्न आपका जल्दी प्रिपेयर होगा, रिटर्न से जुड़ी हुई जो भी कंप्लायंस की चीजें हैं सब उसको भी टैली प्राइम के अंदर लेके आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली जो है जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, देन टेक्नोलॉजी को सभी प्लेटफॉर्म में महत्व दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन को। तो हमारा रिसेंटली अभी टाई अप हुआ है क्लाउड अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। तो आप टैली को अगर आप एग्जिस्टिंग टैली को अगर टैली
Amazon वेब सर्विसेज में क्लाउड एनवायरनमेंट में अगर आपको पोस्ट करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप कर सकते हैं। और मेरे जो भी पार्टनर है, आप जिनको जानते हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, तो भी आपको गाइड करेंगे कि आपके टैली को कैसे आप क्लाउड के थ्रू, क्लाउड में होस्ट करके कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड व्हाट डू शेखर? Yes, thank you, Ankit. Thank you so much for sharing your valuable input. I think so we have already exceeded the time, so I think we should conclude this session. And I wanted to thanks to the entire audience again for joining this insightful sessions. And with this note, we are ending the session. Thank you so much, Ankit, Gyan. Thank you, everyone. Thank you.